Hello and welcome to the lecture of International Business Environment. In this lecture, we will going to have a discussion on the proper law of the contract. That means we will continuing with the further laws जो कि हमने previous session में discuss किया था, the proper laws. The topic which we will going to be covered today are refined theory, qualifications of proper law, applications of a lex causi to the sales of goods, and standardized exports sales contract. Now, yes, in this session, we will very first going to define that what is refined theory. अगर हम लोग refined theory की बात करते हैं तो refined theory एक basic concept पर चलती है, that is what the law is basically followed by according to the exporter's country. जो भी एक exporter है उस country के अगर laws follow किए जाएं तो it will be the more right method to solve that contract, or we can say that the using that law. So the contract has to be governed by the law of a principle. So this law of principle पर ये काम करता है, that is the place of in a business of a party, यानी कि जहाँ पर एक business जो है occur हो रहा है, that is the exporter place. So that is the one principle of the refined theory, whose performance is basically characterized of the contract कि कहाँ पर वो basically perform हो रहा है और उसके हिसाब से ही वहाँ के लॉस को फॉलो किया जाएगा या पर्टिकुलरली उस कंट्री के लॉस को फॉलो किया जाएगा. बट यस, इन द एब्सेंस ऑफ अ चॉइसेस ऑफ लॉ क्लॉज, अगर लॉ क्लॉज इज एब्सेंट है सो इन दैट केस प्रॉपर लॉ इज यूज्ड फॉर दैट केसेस, बिकॉज प्रॉपर लॉ अगेन जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि प्रॉपर लॉ वो होते हैं जहां पर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर खुद से कुछ क्लॉजेस को डिफाइन करते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन. जब किसी भी तरीके की ट्रेड या ट्रांजैक्शंस के लिए वो अपने चॉइसेस को यूज करते हैं. इन दैट केस दैट इज व्हाट कि अगर एब्सेंट है तो अगेन हम प्रॉपर लॉ को यूज कर सकते हैं. सो देयरफॉर इट इज बी डिफाइंड एज द एक्सपोर्टर्स कंट्री लॉ as the exporter principal place of a business is invariable and normally located in his own country. In that case, yes, it is the absence of that and principal place of business is in that case is invariable, so that will be used by the proper law contract. Now the qualification of a proper law. What are those important aspects are to be kept in our mind जब हम लोग एक proper law की बात करते हैं. So in that aspect, yes, the very first thing is where their choices is not manifested and intentions cannot be interpreted, the law with which the transactions has its closest connection. That is what यहाँ पर एक principle को हम follow करते हैं, that is कि कहाँ से एक closest connection है उस पर्टिकुलर लॉ का. अगर एक ट्रेड में हैपनिंग में एक प्रॉपर लॉ है, सो प्रॉपर लॉ में भी अगेन वो कहाँ से सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है. सो द प्रिंसिपल्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द EC कन्वेंशंस ऑन द लॉ एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इन 1980. सो दैट इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर लॉ. If we consider the English authors for that, so the proper law is not of a universal application, but yes, the definition and location of the connection factor. यहाँ पर एक connection factor को consider किया जाता है. Again यहाँ पर हम लोग एक उस country की procedural factors को consider करते हैं कि वो किस location से basically defined है. And yes, at the same time, a contract can also be considered formally valid if it satisfies the formality prescribed by the lex loci contract. That is, अगर तो पूरा एक प्रोसेस उसका डिफाइंड है और जितनी भी चीजें हैं वो आपके प्रॉपर लॉ में ही एक्सप्लेन है, so that will be the more easy kind of a concept. So in that case we can say that qualifications of a proper law is very first to consider that कि किस से वो क्लोजली कनेक्शंस हैं, कहाँ कौन से पर्टिकुलर एरिया से क्लोजली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं. द अनदर इज considered all the location factor, all the conceptual matters जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में हम लोगों ने यूज किए हैं, पर्टिकुलर ट्रेड के लॉ में यूज किए गए हैं. सो दैट विल बी यूज्ड now. And next is the application of an lex causi to the sales of goods. Now this is what the lex causi of the sales of goods act. Again जैसा कि हमने पिछली सेशन में भी डिस्कस किया था कि it is like a proper law which is used or basically formed with the forum, जो कि हमारे लॉ ऑफ फोरम से क्रिएट होता है. सो अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट अगर हम इसकी बात करें तो एप्लीकेशन ये एग्जैक्टली जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी यूज होती है कि किस तरह से एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स जो है अकर होती है.
in that case, according to certain writers and professors, the contractual aspect of a contract of a Sales of Goods Act are basically governed by the proper law of the contract. अगर हम लोग एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उसमें जो एक प्रॉपर लॉ होता है, प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट प्रैक्टिसेस में आता है. एंड अगर किसी तरीके से ये एक्सप्रेस्ड नहीं है या इम्प्लाइड नहीं है, इन दैट केस द सेलर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस वाज कंसीडर्ड. इन दैट केस जो एप्लीकेबल होगा वो अगेन जो सेलर प्रिंसिपल प्लेस है उसका केस जो है एप्लीकेबल होगा. दैट इज व्हाट द एप्लीकेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इस तरह से उसके एप्लीकेशंस को किया जाता है. एंड यस, एट द सेम टाइम व्हेन इट्स कम्स टू डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी, बिकॉज जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं सो देयर इज अ ट्रांसफरिंग ऑफ एन प्रॉपर्टी. हम एक प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट्स पे जा रहे हैं. इट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग गुड्स टू द वन पार्टी. इन दैट केस we have to consider the many things like what exactly the product is, क्या formalities हैं जो product ले करनी है, what are those validity are required, time period क्या है, and what are those locations जहाँ पर वो contract जो है occur होगा. So that means capacity to transfer, formalities of valid transfer, essential validities, the time of passing of property, and yes, location of a title etc. are used. While by determining we can say that by determining these factors, yes, it is more easy to be into the transferring of that goods practices. In that case, yes, govern property right of a party interested by. Now it seems to be agreed that the lex sites governs the proprietary issue even when they were arising solely between the parties to the contract. That is what when both the parties decided to the right practices, either they previously decide all the things or they can create according to the following laws. What happened when it's a general principles and general working? अगर हम general principles की बात करते हैं तो in that case, in that forum, it should be recognized a title validity acquired under the particular situation. कि टाइटल क्या है, किस तरह से ओनरशिप को जो है ट्रांसफर किया जा रहा है. So these are the things which are considered in the application. Now standardized export sales contract. Now in that case we will basically working on ESC. Now we were talking about the ESC. ESC is basically the contract in which the exporter is ready to transfer the property to the importer. In that case, that forms contract in a very legalized manner. They basically legalize through contract, and yes, they bring out a certain kind of we can say that formalized through the written agreement. ये एक तरह का contract, एक written agreement होता है जिसके अंदर हर तरीके से concept की terms and conditions को explain किया जाता है. Yes, कौन से गुड्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किस तरह से होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन्ड होती हैं. That is why ESC is applicable if the product is standardized, one, and such as the we can say that for example ordering the oil from the another country. अगर एक country से आप oil को order करें तो you specify that what kind of oil you require and yes or what quality you require. तो आप उसको पहले ही standardize कर रहे हो. So in that case the standardizers were defining what is applicable. So in that case standardized terms and conditions can be evolved and adopted with or without some changes each time a contract is drafted. So if there was a certain kind of changes, so in that case उसे again redraft करना पड़ता है contract के लिए, because it should be it's a legalized form और हर चीज जो है उसके अंदर mention होती है. There are certain terms and conditions which are defined in the particular contract. ESC का बेसिक फंडा ये है कि यहाँ जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टीज डिसाइड करते हैं दे ऑल आर रिटन, दे ऑल आर मेंशन एंड दे मेक दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इन अ वेरी proper in a right manner. So these terms and conditions are comparatively simple compared to the terms and conditions in the contract for the exporter of the more complicated product. So in that case ये उस केस में ज़्यादा बेस्ट होता है जब एक एक्सपोर्टर जो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट्स में या कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो इन दैट केस ये टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी ट्रांजैक्शंस को इजी करते हैं. Now what are those elements of export sales contract? हमारे export sales contract के अंदर कौन कौन से essential elements हैं
जो कि रिक्वायर्ड है. The very first element is it is a contract between the two distinct party. ये दो parties के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. दिस इज व्हाट बेसिकली देयर मस्ट बी इन अ टू पार्टी अगेन, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ट्रेड का एक पार्ट है. एंड गुड्स व्हिच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इवॉल्व्ड. यस, इट इज ऑल अबाउट export sales contract. That means it's on the basis of any kind of a sale. So when there was a sale, there is a certain kind of goods जो कि exchange होगा, जो move होगा. And yes, at the same time, the exporter transfer or agree to transfer the property in the goods to the importer. In that case, this is in an agreement, or we can say that it's a contract in which both the parties are agreed. Exporter is agreed कि yes, वो अपने product को importer के पास transfer करेगा. The transfer of a property in the goods from the exporter to the importer is for the consideration. That is very true. That one consideration must be there. जो कि एक Indian contract का भी एक concept है कि हमेशा एक considerations होंगी. Without considerations तो performance होगी ही नहीं. So in that case, that consideration must be in terms of price, in terms of money. So the essential elements of certainty of meaning etc. are basically applicable. Yes, जितने भी and इसके अलावा बहुत से certain elements हो सकते हैं which could be defined in the ESC according to the parties requirement, according to their performances. In that case, वो सब भी इसके अंदर consider किए जाते हैं और इसके अंदर define किए जाते हैं. Export sale contracts basically formed by the offer of by a one party and the acceptance by the another party. That's very true. एक party दूसरी party को offer करेंगे and then the other party may accept it. That offer, we can say that could be happened in a written documentation or by the word of mouth. That is by coming with the oral communication. But there must be an offer. But this contract can't be formed out अगर वो written नहीं होगा. So it must be written. So contract may also imply to the conduct of the parties or to form out the course of dealings between the party. So that all comes into oral contract is valid, but it is not as safe and secure. Oral contract को consider तो किया जाता है, but in that case वो इतना ज़्यादा safe और secure नहीं माना जाता. So for that proper contract, it is good to be into the written documentations. Now, so that basically gives us the idea कि ESC है क्या and how that ESC is basically performed. Now there is one contract also which is domestic sales contract. Domestic sales contract basically discussed about the practice within the domestic. Again, it's in a sales contract when two party in the one nation that will lead to the domestic one. When it moves to the other party, that other party belongs to the foreign country, automatically this becomes the export sales contract. So what are those major difference between ESC and DSC? If we talk about ESC and DSC, one of that major difference is the parties, the difference between the two contracts. Party differ करते हैं. There are the appearance to be some different areas and that was from the another different area. Domestic में same nation होगी and export के अंदर different nations perform करेंगी. At the same time, this is mainly because all the export sales have a foreign element. हर export sale का अपना कुछ foreign element होगा, which is absent in all the domestic sales. तो किसी तरीके का foreign element नहीं होगा. Again, ESC में जो foreign element होता है वो उसके concepts को बहुत बदल देता है. उसकी practices, उसकी workings जो होते हैं वो सब बदल जाते हैं. वहीं पर domestic में उन foreign elements को consider करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ESC involves the parties who are called exporter and importer. और domestic में exporter and importers are not there. They must be two individuals who have a capacity to be into the contract. Again, in the prices of ESC is basically quoted. Price जो है पहले से quote up किया जाता है ESC के अंदर और then it was realized in the foreign currency. जबकि DCS में इस तरीके के issues नहीं होते हैं. So these are all the major difference between the ESC and DSC. So the goods are basically exported across the boundary, the exporter country. The applicable laws and jurisdiction under the ESC may or may not be exported country law and others. So that is one of the consideration in that. So yes, in this session we will basically have the idea about the proper law and किस तरीके से उस proper law की पूरी applications होती हैं. We basically get the idea about what is ESC and how ESC is different from the domestic sales contract. So in this basically we have a discussions about the proper law occurred in the international practices and what kind of practices are to be done in that
मैटर, अगर हम ट्रेड्स में जाते हैं सो उन मैटर्स पर किस तरह से काम होगा, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी. वी बेसिकली डिस्कस ऑल इन दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन. वी आर वाइंडिंग अप हियर. थैंक यू सो मच. इग्नू बुक्स.